Okay, good morning students, welcome back. So this is the second day of learning R language. So let's start. So कल हमने देखा था कि हमने वीकडेज को हमने एक वेरिएबल बना के वी हैव पुट सम डेटा इनटू इट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, और अगर हम उसमें नंबर में पुट करना है तो आई डोंट थिंक कि नंबर्स वाला हमने कल किया था. सो नंबर्स में करने के लिए यू जस्ट हैव टू यूज द सेम क्राइटेरिया. जस्ट यहाँ पे जो कैरेक्टर्स के लिए हमने इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए थे वो उसमें यूज़ नहीं करते हैं. जस्ट सी नॉर्मल ब्रैकेट एंड पुट इन योर वैल्यूज़, एंड व्हेंस यू टाइप इट प्रिंट नंबर यू विल गेट ऑल द वैल्यूज. एंड इसको एक्सेस करने के लिए यू कैन अगेन पुट द नंबर. अगर उसको हमें एक्सेस करना है तो यू कैन एक्सेस के लिए हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है. सो इफ़ यू वांट टू गेट द नंबर 2 तो इट शुड बी 10. आपका यहाँ पे रिजल्ट आ गया. Okay, so now to moving on to the next function, next topic in R. So today we will be learning about functions. So functions जिनको नहीं पता है, these are basically predefined formulas जिसमें आपको सिर्फ values put करनी होती है and you can get the results. Or you can create your own functions also, and there are variety of function available pre-built functions in R. So that is the beauty of R, that there are the whole community of R, because it is open source. So उनमें बहुत सारे functions available हैं R की libraries में. So you can directly call them and then accordingly use them for whatever reason you need them. Okay, so we'll start with functions. So let's put in the comment section that today we will be learning about functions in R. Okay, so let's create first name of the function, example underscore function. So the one key issue with R is that R you cannot use spaces in R while programming. Okay, so if I'm talking about, if let's suppose I'm right here as example underscore example function, so it will consider these as two different words or two different whatever commands you're giving. So either you can capitalize this word to easily put into the readable format, or if you don't want then you can easily add an underscore. So इस तरीके से it is easy to understand what is the name of the function that you are writing. So example function, this is the name. Again उसमें कोई value put करनी है तो हमारे पास कौन सा क्या process है हमारे पास, this is bracket this one, and then you put the arrow. So now you are putting the value in example function. So you are defining it as function x comma y. ठीक है. Now this is the preliminary कैसे कैसे आप डिफाइन करेंगे. So function के अंदर आप you can here type it as something else. function की जगह पे function की जगह पे कुछ और तो नहीं लिख सकते, but example function की जगह you can name the function at something else like xyz you can put, or today you can put, or whatever you want to do. So example function, this is the name of the example function for the function that we are using. So function is a let's see here also you can see after function no you are getting the predefined function. So उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या values put करते हैं. So we are putting x and y. Now these are the two values that you are putting in this function. Alright, now what this function will do, you can either define here or you can define that thing in the function itself also. So there are two ways. If you want to define what is the next step or what is this function will do, then you can say it as curly bracket, and if you are putting c x plus 1 comma y plus 8. So what you are telling to the R compiler is that whatever value of x and y we will give, once you run the function, then you will the result should be the value of x should be increased by 1 and the value of y should increase by 8. Alright, so now let's put, so these are basically these are arguments, x plus 1 and y plus 8, these are basically your arguments. Okay, so now if we have to run this function, then again you have to type it example underscore function, and now here you can put the values of x and y 1 comma 5. So it should be 2 and 13. Now you have to run it, and for running it you have to select all these because this is a complete function.
Alright, so you are getting values 2 and 3 here. So if you click only on or you run this only this command, then it doesn't make sense. वो as it is उसको print कर देगा. So just for again revision, we have defined the name of the function we have defined as example underscore function. Then we are using the function key and उसके अंदर हमने दो variables put करें x and y, and then we are defining what the function should do. What should be the इस function के अंदर काम क्या होगा. So इस function के अंदर काम क्या होगा, we are collecting x plus 1, we are giving the formula x plus 1 और y plus 8, और यहाँ पे हम लोग इसको कुछ भी कर सकते हैं. You can divide it or multiply or multiple, you can use the BODMAS और the पूरा sequence अलग अलग change कर सकते हैं. मतलब आप divide, multiply, पूरा complex equation इसके अंदर दे सकते हैं. So whatever value you will give, the function will work accordingly. So यहाँ पे हमने इसकी arguments define कर दी हैं, x into 1 and y plus 8. Now we are giving the values of x and y as 1 and 5. Now again इसे have to पूरा select करके run करना पड़ेगा. Then here the value are 1 and 3 because यहाँ पे हमने multiply का sign कर दिया. अगर यहाँ पे हम लोग division का sign कर देंगे, then again उसको पूरा से run करना पड़ेगा. Then you are getting 1 and 0.65. Alright. अब इसमें और आगे हम क्या कर सकते हैं. There are certain pre-built functions for R. Let's see what are all the pre-built functions for R. यहाँ पे लिखते हैं pre-built functions of R. तो वो क्या है? You can see it as a exponential. So आपके यहाँ पर से आ गया, और उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी आप उसमें क्या पुट कर सकते हैं और वो फंक्शन क्या करता है, वो थोड़ा थोड़ा वो दिखा देता है. ठीक है. सो लेट्स सपोज exp and x exponential है, तो exponential if I want to calculate the exponential of 2. Alright, so exponential 2 is 7.38. Again, if you want to get the value of 10 2, so 10 2 is minus 2.8, or if you want to calculate the value as cos 2, then its value is minus 0.416. If you want to calculate the log, then log, अगेन देखो यहाँ पे इसका पूरा डेफिनेशन बता रहा है कि पहले आर्गुमेंट में क्या आएगा और दूसरे आर्गुमेंट में क्या आएगा. ठीक है. सो अगर इफ यू आर पुटिंग इट एज 2, log 2 का वैल्यू जो नॉर्मल बेस पे लेके चलते हैं बाय डिफॉल्ट पे वो आ जाएगा. बट अगर इसको इफ यू वांट टू डिफाइन, आपको कोई और बेस सेलेक्ट करना है, देन यू कैन डिफाइन देयर आल्सो. सो log, here you can put the value, and if you want to define the base कि किस बेस पे आप उसको कैलकुलेट करना है, तो यू कैन डिफाइन दैट आल्सो. ठीक है. सो लेट्स सपोज log हम सेलेक्ट करते हैं x वेरिएबल में एक वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2, and then it is asking for base, and it is asking for base equals 2. So ideally because value 2 और base 2 भी है तो value should be 1. Alright, so base 1 है. If you change the value here, you can change it to 8, then you will get the value accordingly. ठीक है. So either you can follow this method for log calculation because, and or you can also do log 2,8. This will also work just fine. Why? Because in the function itself it is defined as log. If you see, it is saying by default value as x and base value. So if x, whatever value you put in the first number, it will be considered as x, and whatever value you put in the second number, you will be automatically considered as base. So either you can define as x is equal to 2 or base is equal to, you can explicitly define them in the function, or you can just directly put the values. So whatever the value you will put, they will consider as, the first value will be considered as your x and the second one is your base. Now there is a catch here. If you do, there is a because R is a very user friendly language, so if you don't know anything about a particular function, so there is also an option to know about the particular function, that what that function actually do. Well, obviously you can Google it and you will also get the answer, but if you want to get the answer from R, then you can put in the result section,
you can put question mark and just put the name of the function for which you want to talk about. So log and then log bracket, or if you want to put it as x. So here you will get all the values for whatever the log is doing or whatever the function is. Alright, now it is giving argument, is base, details, so or whatever, I mean the complete details you can calculate. Examples भी इन्होंने दिया है, देखो यहाँ पे जैसे log exponential 3, so you can also calculate the log exponential 3 values. ठीक है, so let's see, let's calculate करके देखते हैं इसको log exp. So they are using a function within a function. So याद रखना तीन तरह के ब्रैकेट हैं R में. The one bracket which is commonly used is this one bracket, the normal bracket, which is generally used to put the values. In x की वैल्यू डिफाइन करनी है, कोई भी वैल्यू डिफाइन करनी है, इट इज बेसिकली टू पुट द वैल्यूज. जो आपका कर्ली ब्रैकेट है, दैट इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द रेंज ऑफ द फंक्शन, कि यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से फंक्शन खत्म होगा. एंड द स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज्ड टू पुट द वैल्यूज. कि मान लो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में कि आपको कोई जो आपने जो एक डिफाइन किया है उसमें से आपको कोई वैल्यूज़ निकालनी है. जैसे यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करी हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. तो नाउ सॉरी, ये हमने इसके अंदर पुट किया था, डेज के अंदर ये वाली चीज़ें पुट करी थी. तो नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एक्सट्रैक्ट दिस वन डेटा, वन वैल्यू, सो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं. इट इज़ बेसिकली फॉर इंडेक्सिंग, कि अगर हमने वन यहाँ से निकाला है तो वन कैन बी विल सिग्निफाई मंडे. सो ये वन, इसको अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट दैट डेटा. ठीक है, और इसको सबसेट्स में डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, कि अगर इसका एक और सबसेट बनाना है तो एक और वेरिएबल में अगर इसका सबसेट बनाना है तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है इसमें एक्सपोनेंशियल 3 वाले में. इसमें देखो 3 आ गया, log 3 एक्सपोनेंशियल 3, वो कट कर आपस में कट हो जाता है. सो दे आर गिविंग द वैल्यू 3. नाउ लेट्स सी कि इसमें क्या होता है. ये वाला जो एग्जांपल है इन्होंने, ये क्या इन्होंने क्या किया, x में वैल्यू पुट करी है इन्होंने 10 raised to the power this. ठीक है, सो चेक करके देखते हैं क्या कर रहा है. ओके, सो इसमें वैल्यू पुट कर दी है एंड देन वी आर प्रिंटिंग प्रिंट x. प्रिंट x, इसमें अच्छा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा पहले. So it is giving these values. So whatever the function would have done, let's see if it is possible to see what is the function is doing. It is possible. तो ये मैंने स्टेप्स लिख के रखे हैं इसके, कि वो एक्चुअल में इस फंक्शन में क्या हो रहा होगा. तो ये वाला फंक्शन जो हमने किया है उसको प्रिंट किया है, तो एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे हो रही होगी. तो ये तो यहाँ पे देखो पावर का साइन है, ये आपका एडिशन का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और ये आपकी एक रेंज दी गई 1:92. तो ये सारे स्टेप्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे 1 by 1. और x एक वेक्टर डिफाइन किया गया है. ठीक है, तो अब पहले कैलकुलेशन स्टेप आएगा 1:9, यानी कि दिस क्रिएट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 9. दूसरा, अब इसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 के साथ, बॉड मास रूल फॉलो करेंगे. तो ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 2. 1:9 में जो भी नंबर आएगा 1 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर 2 की 2 से होगी, फिर 3 की 2 से होगी, फिर 4 की 2 से होगी. और उन सब का अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग जो वैल्यू आएगी उसमें हम हर बार उसमें 1 ऐड कर रहे हैं. 1 इज एडेड टू ईच रिजल्ट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप. नाउ अब उसका हम लोग उसको नेगेटिव कर रहे हैं. द नेगेटिव ऑफ ईच रिजल्ट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप इज टेकन. तो यहाँ पे आने के बाद हमने सारे नंबर्स का, जैसे 2 नंबर लिया तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, तो -5 यहाँ पे वैल्यू आ गया. ऐसे सारे 1 to 9 तक हमने सारे रिजल्ट नोट कर लिए, और उसकी अब हम पावर 10 raised to पावर उसको कर रहे हैं -5, या जो भी आपका नंबर आएगा. सो 10 इज raised to the power of each result from the previous step. The result is a numeric vector x with element corresponding to 10 raised to power 1 plus 2k, where k is in each number is a sequence from 1 to 9. So इसका रिजल्ट आपका कुछ ऐसा आएगा. ये आपका इसका रिजल्ट है, ये डिपेंडिंग अपॉन ये आपने 1 से 9 तक की जो आपने वैल्यूज ली है. ठीक है, सो आई होप दिस मेक्स अ बिट थिंग मोर क्लियर अबाउट द फंक्शन. वी विल delve into the more in the R world in the next lecture.